अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन लाइफ इन द नीदरलैंड। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पर खैरियत से हैं। छोटी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, शादो कामरान रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम नीदरलैंड के जिस सिटी को विज़िट करने जा रहे हैं वो है लीसे। और लीसे जौन सा है वो ट्यूलिप के लिहाज से बहुत फेमस है। और यहाँ पर क्यूकनऑफ गार्डन भी है, बहुत ही खूबसूरत सा। और जो कि हर साल जो है स्प्रिंग फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ करता है क्यूकनऑफ, तो हम वही विज़िट करने जा रहे हैं, उसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जाते जाते रास्ते में आपको लीसे के बहुत ही खूबसूरत से जो सिटी के व्यूज़ हैं वो आपको दिखाएंगे। और होपफुली आपको बहुत खूबसूरत लगेगा ये। और इसका जो ट्यूलिप फील्ड्स हैं उसका जो व्लॉग है, मैं अपकमिंग जो व्लॉग होगा मेरा उसमें अपलोड करूँगी, और उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप। तो फ्रेंड्स, आपको सड़क पर बहुत ही ज़्यादा लोगों की गहमा गहमी नज़र आ रही होगी। लोग साइकिल्स पे जा रहे हैं कुछ, और कुछ वेट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, बच्चों ने अपनी साइकिल को फूलों के साथ सजाया हुआ है। तो हम लोग भी उस तरफ बाहर जा रहे हैं और अपनी कार पार्क करेंगे। आप एंड तक ज़रूर इस व्लॉग को फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। See trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself,
तो फ्रेंड्स जो क्यूकेनऑफ है ये बहुत ही डिफरेंट थीम्स के साथ हर साल जो है स्प्रिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है और बहुत ही खूबसूरत और देखने के काबिल होता है। Staat er mij voorbij, naar de oude opzij. Was een olifant op door, ja, een olifant op door.
तो फ्रेंड्स होपफुली आपने इस स्प्रिंग फेस्टिवल को बहुत इंजॉय किया होगा और मैंने भी बहुत इंजॉय किया है, क्योंकि मुझे पूरा साल इसका इंतज़ार होता है और मुझे देख के बहुत ही एक खुशी महसूस होती है इसको। तो आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत ही खूबसूरत सी जगह और व्यू के साथ मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।